Hello, Assalamualaikum students. I'm your lecturer Mohammad Khan Gopal, and today we will discuss about the third chapter of our biology, which is known as the enzymes. As we know that enzymes are biocatalysts which are present in our cells to perform catalytic actions within the cell. Now, first of all, as we know that there are some metabolic activities taking place within the cell. Metabolism is divided into catabolism and anabolism. So in catabolism, large molecules are broken down into smaller molecules of lower molecular weight, whereas in anabolism, small molecules bond with each other to make large molecules of higher molecular weight. In living cells, these reactions, these metabolic reactions are taking place at extremely high rates. Now, how is it possible? It is possible due to the biocatalyst or enzymes which are present in our cells or which are present within an organism. The word enzyme is derived from a Greek word means zyme means yeast. Yeast is a unicellular fungus from which the enzyme was first discovered. This enzyme term was coined by Friedrich Wilhelm Koene in 1878. Enzymes are defined as organic compounds or organic substances capable of, they have the ability of catalyzing specific chemical reactions in the living system. Now we move to the other slide. Besides, most of the enzymes are proteinaceous in nature, means they are made up of proteins. However, Thomas Cage and Sidney Altman discovered that certain molecules of ribonucleic acid also function as enzymes. As we know that ribonucleic acid is a nucleic acid, that's why these molecules are called ribozymes that process genetic information in a cell. Now another point of an enzyme, energy of activation. Now what is energy of activation? It is the energy required for the activation or initiation of an enzyme. So why enzymes are so important? एंजाइम छो लाज़मी आहिनि असांजे सेलनि में ऐं असांजे लाइफ जे अंदरि एंजाइम्स जो कहिड़ो कमु आहे. As we know that chemical transformation or chemical change requires breaking of bonds in reactants. Reactants are those chemicals which are present on the left side of an equation. These are known as the reactants. They react and make some products. For example, if we make water, then we need reactants hydrogen and oxygen. When hydrogen and oxygen react with each other, they form the product of water, which is H2O. So these reactions require some enzymes for their activity.
So the reactants must have sufficient kinetic energy for a reaction to be occurred within the cell. Those reactants must have kinetic energy, means energy of motion or energy due to motion. Now this energy is required to overcome a barrier or a hindrance. This barrier or hindrance is known as the energy of activation. Enzymes lower the activation energy of a reaction. एंजाइम जो कम आहे त रिएक्शन जी जेका एक्टिवेशन एनर्जी आहे उनखे घटि करे। जेकर एंजाइम न हूंदो त एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खपंदी कंहिं बि रिएक्शन खे स्टार्ट करण जे लाइ। पर ही एंजाइम हूंदा आहिनि जेके कंहिं बि सेल जे अंदरि उन रिएक्शन खे जल्दी में परफॉर्म करण में मदद ॾींदा आहिनि, छाकाणि त एंजाइम्स जी मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी घटि थींदी। Now this graph shows the energy of activation. Energy is shown on its y-axis, while reaction progress is shown on the x-axis of this graph. Now as you see that this blue structure is an enzyme, and this small sphere is just is a substrate. Now substrate are those substances on which enzymes are acting upon. Substrate उहे substance हूंदा आहिनि जिन ते enzyme कम कंदो आहे। Now this substrate will attach itself to the active site of the enzyme. Substrate छा कंदा पाण खे एंजाइम जी एक्टिव साइट ते अटैच कंदा त जीअं रिएक्शन थिए। जेकॾहिं सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ते न लॻंदो त रिएक्शन स्टार्ट न थींदो। उनखे असां अॻिते हली डिस्कस कंदासीं डिटेल में। Now when we look at carefully this graph, we can see that if the enzymes are present, the energy required for starting a reaction or activation energy is less than the reaction in which there is no enzyme. As you see these lines above the horizon, above this line, these lines show that if there is no enzyme, then the activation energy will be higher. ही जेका लाइन तव्हां ॾिसो था हिन में इहा शो थिए थो त जेकर एंजाइम न हूंदो त जेका एक्टिवेशन एनर्जी हूंदी कंहिं बि रिएक्शन खे स्टार्ट करण लाइ उहा तमामु घणी हूंदी। जीअं त ही जेको कर्व आहे उहो तमामु वधीक मथे आहे, यानी एनर्जी घणी जेका असां रिक्वायर थींदी। इन जे करे असां जेकॾहिं एंजाइम हूंदो त उहा एनर्जी घटि थी वेंदी। ही कर्व विदाउट एंजाइम जी आहे ऐं ही हेठियों कर्व जेको आहे दिस लाइन इज़ showing that the enzymes are present in this reaction. त जेकॾहिं एंजाइम हूंदो त एक्टिवेशन एनर्जी घटि खपंदी ऐं जे न हूंदो त एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खपंदी। Now on the right side of the reaction you can see the enzyme and the product. When we look at the reaction at the start and the end of the reaction, there is no change in the structure of enzyme. यह ख़ासियत आहे एंजाइम जी त एंजाइम रिएक्शन जी शुरूआत में ऐं रिएक्शन जे आख़िर में जहिड़ो हूंदो तहिड़ो ई रहंदो, हुन में का बि तब्दीली न ईंदी। विच में तव्हां ॾिसी सघो था त एंजाइम ऐं सबस्ट्रेट पाण में बॉन्ड ठाहिया ऐं आख़िर में जेको आहे सो एंजाइम अलॻि थी वियो ऐं सबस्ट्रेट कन्वर्ट थी वियो छा में प्रोडक्ट में, जेको रिएक्शन जी असल जेका आहे सा मक़सदु हूंदो आहे। इन सां एंजाइम जी सिहत ते
उनजी एक्टिविटी उनजे स्ट्रक्चर ते को बि फ़र्क़ु न थियो। एंजाइम सिर्फ़ एंजाइम जे हुजण सां छा थियो, एक्टिवेशन एनर्जी घटि थी वई ऐं रिएक्शन आराम सां जल्दी में थी वियो। Now in this reaction, equilibrium or ratio of concentration of reactant and product is never altered, it remains the same. जो मक़सद आहे त इन रिएक्शन में जंहिंमें एंजाइम हूंदो उन में जेका आहे रिएक्टेंट जी कंसंट्रेशन ऐं उनजे प्रोडक्ट जी कंसंट्रेशन कॾहिं बि चेंज न थींदी ऐं एंजाइम जहिड़ो हूंदो तहिड़ो ई रहंदो, उन में का बि तब्दीली न ईंदी। Now the characteristics of enzyme. Characteristics means properties, ख़ासियतूं। एंजाइम जूं कहिड़ियूं ख़ासियतूं आहिनि? Number 1, enzymes are biocatalysts. Bio means life. Catalyst means those organic compounds which speed up the reaction without consuming themselves. So enzyme is just like a biocatalyst which is present in our life, which is present in our cells. It catalyzes the reaction, the metabolic reactions within a cell or within an organism. So these biocatalysts are produced in the protoplasm of a cell. They are synthesized, they are made within the cell. Enzymes are macromolecules, means they are large molecules of globular proteins, of higher molecules of proteins with higher molecular weight. Number 3 point, they may entirely consist of protein, for example, amylase or pepsin. It means they are only made up of protein. कुछ अहिड़ा एंजाइम्स हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु प्रोटीन जा ठहियल हूंदा आहिनि। अहिड़े एंजाइम्स खे असां चवंदा आहियूं त इन्हनि में ॿियो नॉन प्रोटीन पार्ट न हूंदो आहे। मुंहिंजो एग्ज़ाम्पल इहो आहे अमाइलेस या पेप्सिन। Number 4 point, a hollow enzyme consists of a protein and a non-protein part. Hollow enzyme उहो एंजाइम हूंदो आहे जंहिंमें प्रोटीन पार्ट बि हूंदो आहे ऐं हिकिड़ो नॉन प्रोटीन पार्ट बि हूंदो आहे। जंहिंखे प्रोटीन पार्ट खे असां को एंजाइम चई सघूं था ऐं जेको नॉन प्रोटीन पार्ट हूंदो आहे उहो उनजो कोफैक्टर हूंदो आहे या उनखे असां प्रोस्थेटिक ग्रुप चई सघूं था। Enzymes, number 5, enzymes react with both acidic and alkaline substances due to the presence of protein as their major part. Enzymes acid वारे कंपाउंड सां ऐं बेस यानी अल्कलाइन कंपाउंड सां ॿिन्ही सां रिएक्ट करे सघे थो छाकाणि त हुन में अंदरि प्रोटीन मौजूदु हूंदा आहिनि। Number 6, endoenzyme. Endo, as we know that endo means inside. Zyme means enzyme. It is an intracellular enzyme जेको सेल जे अंदरि हूंदो आहे which acts within the same cell. जेको सेल साॻी सेल जे अंदरि जेको आहे कमु कंदो आहे उन एंजाइम खे असां चवंदा आहियूं इहो एंडोएंजाइम आहे। Whereas exoenzyme is the extracellular enzyme which acts outside the cell. Exo means outside. एक्सोएंजाइम उहो एंजाइम हूंदो आहे जेको सेल जे ॿाहिरां कमु कंदो आहे या सेल खां ॿाहिरि कमु कंदो आहे, उनखे असां एक्सोएंजाइम चवंदा आहियूं। Now move to the point number 8. Enzymes are specific in their nature and their action. हर एंजाइम जी फितरत, उनजो फंक्शन, उनजो कमु ऐं एक्शन जेको आहे उहो ख़ासि हूंदो आहे। हिकिड़ो ख़ासि एंजाइम कंहिं ख़ासि मक़सद जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टेज़ एंजाइम माल्टोज़ शुगर खे डाइजेस्ट कंदो। सक्रेज़ एंजाइम सक्रोज़ शुगर खे डाइजेस्ट करण में या हाइड्रोलाइज़ करण में हेल्प कंदो। अहिड़े तरीक़े सां हर एंजाइम जो कमु विरहायल आहे। Number 9 point, their molecules are much greater in size than the substrate. हिननि जा मॉलिक्यूल्स साइज़ जे हिसाब सां तमामु वॾा हूंदा आहिनि
बनिस्बत सबस्ट्रेट जे, यानी जंहिं सबस्टेंस ते कमु कंदा उन सबस्ट्रेट खां एंजाइम जी साइज़ तमामु वॾी हूंदी, यानी एंजाइम वॾे साइज़ जा हूंदा ऐं सबस्ट्रेट नंढी साइज़ जा हूंदा। Number 10 point, they have specific sites to react with the substrates. These sites are called active sites. एंजाइम ते हिकिड़ी ख़ासि साइट जॻह हूंदी आहे जिते सबस्ट्रेट अची करे लॻंदो आहे ऐं रिएक्शन थींदो आहे, उन जॻह खे एक्टिव साइट चइबो आहे। जॾहिं एक्टिव साइट ते सबस्ट्रेट लॻंदो त रिएक्शन स्टार्ट थींदो ऐं एंजाइम जेको आहे सो प्रोडक्ट ठाहिण में उनखे मदद कंदो। एक्टिव साइट खां जेका ऑपोजिट साइट हूंदी आहे उनखे असां एलोस्टेरिक साइट भी चवंदा आहियूं। पॉइंट नंबर 11, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। जेको रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन जो जेको टाइम आहे उनखे स्पीड अप कंदा आहिनि, उन में तेज़ी आणींदा आहिनि। जेकॾहिं एंजाइम न हूंदो त रिएक्शन घणो टाइम वठंदो, पर जेकॾहिं एंजाइम हूंदो त रिएक्शन घटि टाइम वठंदो। Now they are required in very small quantities. एंजाइम्स हमेशा थोरी क्वांटिटी में, घटि तइदाद में जेको आहे सो खयां वेंदा आहिनि। They are required in very small quantities. Point number 12 is activators are certain ions or salts. Activators हिकिड़ा आयन्स या साल्ट यानी लूण नमकियात हूंदी आहे। They accelerate enzyme activities. उहे एंजाइम जे कम खे तेज़ कंदा आहिनि, इन जे करे उनजो नालो असां एक्टिवेटर्स रखियो आहे या एक्टिवेट करण वारा। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज़, निकिल, मैग्नीशियम ऐं क्लोरीन वग़ैरह वग़ैरह। ही अहिड़ा सबस्टेंस हूंदा आहिनि जेके एंजाइम जी एक्टिविटी खे वधीक पावरफुल बणाईंदा आहिनि। Point number 13, inhibitors. Inhibitors are certain factors. There are certain factors that can inhibit enzyme activities. Inhibitors अहिड़ा factors हूंदा आहिनि जेके एंजाइम जी एक्टिविटीज़ खे रोकींदा आहिनि। They stop the enzyme activities. They inhibit or stop the enzyme activities. These substances are known as these factors are known as the inhibitors. For example, substrate concentration, enzyme concentration and pH. अॻिते हली असां डिस्कस कंदासीं त सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन ऐं pH जो एंजाइम जी एक्टिविटीज़ ते कहिड़ो असरु थिए थो। फॉर एग्जाम्पल जेकॾहिं असां सबस्ट्रेट खे अध खां वधीक वधाईंदासीं त एंजाइम जी एक्टिविटी ते असरु थींदो। अहिड़े तरीक़े सां एंजाइम ख़ासि pH ते कमु कंदा आहिनि। जेकॾहिं हिकिड़ी ऑप्टिमम pH आहे त उन ते एंजाइम वधीक कमु कंदो, यानी नॉर्मल pH ते वधीक कमु कंदो बनिस्बत घटि या वधि pH लेवल ते। Point number 14 is enzymes are thermolabile. Thermolabile means they are heat sensitive. एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव हूंदा आहिनि, उनखे हीट जो एहसास हूंदो आहे, यानी घणे टेम्परेचर खे कुझु एंजाइम्स बर्दाश्त न करे सघंदा आहिनि ऐं काफ़ी असांजे जिस्म जा एंजाइम्स हिकु ख़ासि लेवल जे टेम्परेचर ते कमु कंदा आहिनि। जीअं त असांखे ख़बर आहे त ह्यूमन बीइंग जो जेको नॉर्मल टेम्परेचर आहे उहो 37 सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट ऐं 310 केल्विन हूंदो आहे। इन टेम्परेचर खे असां ऑप्टिमम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर चवंदा आहियूं। इन ई टेम्परेचर ते एंजाइम जी एक्टिविटी तमामु वधीक हूंदी आहे। दे आल्सो वर्क ऑन अ स्पेसिफिक pH लेवल। एंजाइम हिकु ख़ासि pH लेवल ते बि कमु कंदा आहिनि। के अहिड़ा एंजाइम्स हूंदा आहिनि जेके एसिड में कमु कंदा आहिनि, के अहिड़ा एंजाइम्स हूंदा आहिनि जेके बेस या अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जेको आहे सो कमु कंदा आहिनि। मिसाल तौर पेप्सिन जेका आहे उहा असांजे स्टमक जे अंदरि एसिडिक एनवायरनमेंट में कमु बहितर तरीक़े सां कंदी। पॉइंट नंबर 15 इज़ दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। इहा असां अॻु में डिस्कस करे चुकासीं त एंजाइम जी स्ट्रक्चर में को बि फ़र्क़ु न थींदो, उहो सिर्फ़ु
कंहिं बि रिएक्शन खे जे जेका एक्टिवेशन एनर्जी आहे उनखे घटाईंदा ऐं उन जेको आहे प्रोडक्ट ठहण में हेल्प कंदा ऐं पाण कंज़्यूम या इस्तेमालु न थींदा। इहा असांजे हिन लेक्चर जी लास्ट पॉइंट हुई। उमेद आहे त हीउ लेक्चर तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो। जेकॾहिं हिन में कुझु पॉइंट्स रहिजी वियूं आहिनि या का गुंजाइश आहे त उहा कमेंट्स में मूंखे ॿुधाईंदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जेके क्लास में असां मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम ते लेक्चर ॾींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।